Hello everybody. The case we will be discussing today is Cherubin Gregory versus State of Bihar. Now this case law that we are discussing today is on the concept of rashness. First of all, the name of the case is Cherubin Gregory, who's the accused appellant in this case versus State of Bihar, who is the respondent. Now the topic on which this case law is section 304A of IPC, that is rash or negligent act. Now when we discuss about this case law on rash or negligent act or section 304A, you need to understand what are the ingredients of section 304A. The first ingredient or how this section start is whoever causes death. It says whoever causes death. So the first ingredient is that there should be death caused. Number two, of any person. By what? How you are doing it? By either a rash act or a negligent act. In this the term or has been used. मतलब यहाँ पर जो आपको एक्ट करना है वो या तो रैश होना चाहिए या फिर नेग्लिजेंट होना चाहिए. इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो सेक्शन की जो पनिशमेंट है वो एप्लीकेबल है. नॉट अमाउंटिंग टू culpable homicide, which means that the ingredients of culpable homicide should not be present in the present circumstances so that a case of 304A would be made out. Okay, now when I say this, all these ingredients should be present in that particular case law. Now coming back to the facts of this particular case. The facts of the particular case are that this accused appellant had a washroom in his house, and 1 week prior to the date of incident, the wall of that washroom fell, because of which there were intruders entering into the washroom, including the deceased, and leaving the house after using. The accused appellant had given various oral warnings, but all those oral warnings proved to be ineffective. Now, after this point, when it was proved to be ineffective, the accused appellant decided to now install a copper wire. Okay, now this installation of copper wire is actual problem in this particular case law. Now what happened is that the fact of the case is simple, that a copper wire has been installed. The installation has been such that from the passage it is now being carried to the washroom. On the date of incident, the deceased, that is Lovleen, entered into the washroom, used the washroom, and while she was so leaving, she was electrocuted, which means that she came into contact with the electric wire and died. Now the question before the session judge is whether a case of 304 is made out or not. The answer to this is that the court has said that it is a rash act because any reasonable man would not install a live electric wire. Usually, in order to protect our property from the trespassers, we do install wires. We do use broken glasses on the boundaries of our property, but nobody uses live electric wire. Now,
In this stage, or at this stage, the accused had contended that because it was a daybreak, which means that when the incident has happened, it was daytime and the light was bunging, which means the light was bright there. Anybody who would come to that particular place could see that there is a live electric wire, to which the session judge did not entertain this contention of the accused and had answered in negative and upheld that a case of rash act has been made out. The accused appellant went in appeal to the High Court. Now, in High Court, the line of contention of the accused was different. The line of contention, when I say how it was different, in the lower court, they had only said, the only डिफेंस दैट दे हैव टेकन इज बेसिकली, जो सिर्फ इन्होंने यहाँ पर डिफेंस जो लिया है वो सिर्फ ये डिफेंस लिया था कि आपका जो इंसिडेंट है वो दिन के टाइम पर हुआ और जो लाइट थी वो हमने जला रखी थी तो कोई भी देख सकता था, लेकिन वो लाइन ऑफ कंटेंशन सेशन जज ने एंटरटेन नहीं की. अब ये मैटर जाता है हाई कोर्ट में. ठीक है, अब हाई कोर्ट में इन्होंने अपना लाइन ऑफ कंटेंशन कैसे चेंज किया. हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने कंटेंशन ये दिया कि हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. ठीक है, अब ये कहते हैं जी हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन 97 में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 और सेक्शन 103 के हिसाब से हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. टू दिस द हाई कोर्ट हैज रिप्लाइड बाय सेइंग दैट laying down a trap for a trespasser would not give you a right to take defense of you would not be allowed to take the right of private defense. In this now they are saying that you do not have a right of private defense only because the person is a trespasser does not mean that you have a right to lay down a trap. When I say this, they are simply saying, यहाँ पर उनका सिंपल मतलब ये है कि क्योंकि वो एक ट्रेसपासर है आप उसके लिए ट्रैप नहीं लगा सकते. वो ट्रेसपासर है, वो अपनी जगह पर गलत है, इसमें कोई हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे. हाँ वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो गलत है, लेकिन उसके साथ आपके पास ये कोई राइट नहीं है कि आप एक ऐसा ट्रैप लगा देंगे उसके लिए जिससे उसकी जान को खतरा हो जाए. और जो आपका जो वायर आपने लगाया है उसमें इतना हाई वोल्टेज करंट है कि वो डेंजरस था कि जैसे ही उसने आप उसको वायर को टच किया उसकी डेथ हो गई. तो हाई कोर्ट ने ये जो कंटेंशन था अक्यूज्ड एपेलेंट का इसको कंसिडर नहीं किया गया, इसको कंसिडर नहीं किया. दूसरा जो कंटेंशन हाई कोर्ट में इन्होंने दिया, तो दूसरे कंटेंशन में इन्होंने ये बोला कि जी जो यहाँ पर वो है डिसीज्ड है वो एक ट्रेसपासर है, इसलिए उसका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग नहीं बनता, उसके खिलाफ वो नहीं है, आपके पास कोई भी राइट नहीं है, उसको कोई भी हम मुआवजा नहीं दे सकते. बहरहाल क्योंकि ये यहाँ पर टॉर्ट्स नहीं होगा इसलिए ये क्राइम भी नहीं होगा, ये ऑफेंस भी नहीं होगा. लेकिन हाई कोर्ट ने इसको भी मना कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपका टॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिमिनल लॉ का भी ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज इन क्रिमिनल लॉ वी हैव डिफाइंड द लाइन्स एज टू व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट ये कहता है कि आपका जो लॉ ऑफ क्राइम्स है, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसकी एक सीमा है, उसने वहाँ डिफाइन किया गया है कि अगर हमारे को किसी ऑफेंस को क्राइम बनाना है तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. अगर आपका जो इवेंट है वो उस क्राइम की डेफिनेशन में आता है तो वो भले ही टॉर्ट ना हो पर वो क्राइम होगा. अब इस भी जवाब से जो अक्यूज एपेलेंट है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है और वो अब अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में. जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सारी कहानी सुनता है कि इसने सेशन कोर्ट में क्या कंटेंशंस दी हैं दोनों पार्टीज़ ने और हाई कोर्ट में क्या कंटेंशंस दी हैं. अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब यहाँ पर ये है दैट नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग द concept of rashness as to what is rashness in the first place.
They are saying a rash act is a over hasty act, or it is an act which has been done in a hurried manner without realizing the consequences of the act. मतलब ये जो रैश एक्ट है, ये आपने इस तरीके से किया, इतनी जल्दी में कर दिया कि आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इस रैश एक्ट को जो हम कर रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। रैश एक्ट जो है वो नेग्लिजेंट एक्ट से डिफरेंट होता है। इस केस लॉ में हमने रैश एक्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट केस में हम लोग नेग्लिजेंट एक्ट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट सिंपली आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज़ अ रैश एक्ट। इफ़ यू आर डूइंग इट एन एक्ट by which you are causing hurt to the other person, by which the person has passed away, he died, and because of your act, if something like this or death of a person happens and this act has been done in a hurried manner, it would be considered as a rash act. After saying this, as to defining what is a rash act, the punishment for rash act which is given by the legislature is extending up to 2 years or fine. Okay, this is what IPC states under section 304A. सेक्शन 304 में आपकी लेजिस्लेचर ने ये पनिशमेंट निर्धारित की है। इस पनिशमेंट की डिस्कशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये रैश एक्ट होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपको बताया कि रैश एक्ट क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे फर्दर ये कहता है कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो डिसीज्ड है, ठीक है ना, अब जो यहाँ पर डिसीज्ड है, नो डाउट वो ट्रेसपासर तो है, बट वो आउटलॉ नहीं है। अ ट्रेसपासर इज नॉट एन आउटलॉ, अ केपुट लुपिना, विच मीन्स कि just because he has done wrong at his end does not mean that law or the protection of law would not be given to him. He would be protected by law. You cannot lay down a trap against a trespasser so as to cause the death of the trespasser. अगर trespasser है भी, अगर उसने गलती की है तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक ऐसा ट्रैप नहीं लगा सकते, और फिर आप ये कंटेंट नहीं कर सकते कि जो ट्रेसपासर है वो आउटलॉ है। ट्रेसपासर आउटलॉ नहीं है। यहाँ पर आई विल रिपीट दिस अगेन, अ ट्रेसपासर इज नॉट एन आउटलॉ। ऐसा नहीं है कि उसको लॉ की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। जो लॉ में है उसको हम अकेले नहीं छोड़ देंगे, उसको लॉ की प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ट्रेसपासर को मिलती है। तो इस जजमेंट में इन्होंने ये अपहेल्ड किया कि जो अक्यूज्ड एपेलेंट है उसकी जो अपील है उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया, और जो पनिशमेंट सेशंस जज ने इनको दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। Now once we are done with what was there in this particular case law, I would like to take you to the present punishment that has been provided for this particular section. The section remains the same, that is causing rash act or negligent act, but there are certain additions to it. In IPC, we are simply talking about a rash or negligent act. Not amounting to murder, and the punishment is extending up to 2 years. लेकिन अब जो हमारा आया है BNS, जो नया लॉ है, उसके हिसाब से है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ये इंग्रेडिएंट भी है, ये इंग्रेडिएंट भी है, पर यहाँ जो पनिशमेंट है अब वो 5 years कर दी, may extend to 5 years। दूसरा इसमें नई चीज़ यहाँ पर ये आई है कि अगर कोई
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यहाँ पर है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब है कि अगर कोई आरएमसी है और वो कोई भी नेग्लिजेंस करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर 2 साल की है, इसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई की है वो है विद रिगार्ड टू द केसेस वेयर इन सपोजिंगली एन एक्सीडेंट हैज़ हैपन्ड। कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है और उस पे जब रोड एक्सीडेंट होता है तो जो एक्सीडेंट करने वाला है यानी जो अक्यूज्ड है वो उस जगह से चला जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस। थर्ड एस्पेक्ट इसका यहाँ पर ये है, सपोजिंगली देर इज अ नेग्लिजेंट एक्ट वाइल ड्राइविंग and the driver or the accused, he would be in this case, leaves that day the place of occurrence without informing the police officer or magistrate regarding the incident, the punishment may extend to 10 years or fine. These are 3 new points that have been added. One is with regard to the punishment from 2 years to 5 years. Then they have specified as to what would be the matter in case the person is a registered medical practitioner, and what would be the answer if the person is a driver who has left the place of occurrence without informing the police or magistrate, and the punishment would be now for 10 years. This judgment is only this much. It is a short judgment, a simple judgment. That is all with regard to the concept of rashness. Thank you.